Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the part third of the previous video, that is ectopic pregnancy. Today I will be discussing about the investigations for the diagnosis of tubal ectopic pregnancy. The tubal ectopic pregnancy, which I have already discussed and covered, what is it, what are the etiological factors, and the normal diagnosis of the ectopic pregnancy. But today we will be discussing the investigations related to the tubal ectopic pregnancy and the ovarian ectopic pregnancy. The investigations for the diagnosis of the tubal ectopic pregnancy, how to determine, how to investigate whether the woman is having the tubal ectopic pregnancy. The first thing which we do is the blood examination, and it should be done as a routine examination, the बेसिक ब्लड एग्जामिनेशन, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन आता है, और ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग आता है, द टोटल वाइट सेल count and the differential counts of white blood cells or erythrocyte segmentation rate, that is ESR. And in these blood examinations you can find variations in the tubal ectopic pregnancy, like if there may be the varying degrees of leukocytosis or raised ESR, then there will be the clue that the women may have the tubal ectopic pregnancy. The first thing which we will do is this blood examination. The second, we can go for the Caldo synthesis, and it is very simple and safe procedure. अगर TVS available नहीं है, transvaginal sonography or the laparoscopy is not readily available, then this Caldo synthesis, it is still a diagnostic alternative. And this unfortunately, but this चाहे negative Caldo synthesis आया, it doesn't rule out the ectopic pregnancy, neither a positive result is very specific. But what we do in this test, at least we use 18 gauge lumbar puncture needle, and we fit it before the what is called as syringe, ठीक है, fit करते हैं syringe में, and the posterior fornix is punctured to gain access into the inside of what is called as pouch of deluxe, जो मैंने बोला, if there is a hemorrhage. And then aspiration of non-clotting blood is taken out, and we go for the hematocrit level. And if the hematocrit level is 15% greater, then we can say that there is the ruptured ectopic pregnancy also. So this Caldo synthesis, you can see in this picture also, it depicts how we do the procedure and how the this is very useful technique in determining the tubal ectopic pregnancy. The next one is the sonography, whether it is transvaginal TVS transvaginal sonography. It's very informative, and the diagnostic features like the absence of intrauterine pregnancy with the positive test अगर आया भी होगा, फिर भी हमें इससे सीधे पता लगेगा there is absence of intrauterine pregnancy, या fluid है in the pouch of deluxe जो हमने already discuss किया, या कोई adrenal mass है which is separated from the ovary, or there is we can go for the color Doppler sonography also in these cases, जिसमें हमें सीधे ये पता चल सकता है कि enhanced blood pattern क्या है outside the uterine cavity. We can there may be the cardiac motion also, जो हम देख सकते हैं, जो in case of unruptured tubal ectopic pregnancy में हमें देखने को मिलता है. So sonography is also the technique by which we can determine the tubal ectopic pregnancy. The next is the laparoscopy. As you know, all this, it offers a complete benefit in these cases, and
what it has a very lot of advantages also. For example, confirmation of the diagnosis बन सकता है, या at the time we do the laparoscopy ये एक उसी time हम removal of the ectopic mass using the operative procedure at the same time कर सकते हैं. It is a gold standard for the diagnosis of this ectopic pregnancy. We can go for the direct injection of some chemotherapeutic agents into this ectopic mass if we decide the medical management for these also. So this laparoscopy is another investigation which can be done for the diagnosis of the ectopic pregnancy. Next, the dilatation and the curettage. The dilatation of the curettage, you can see the depicts how it is done, and it is very we can identify the decidua without the villi कि है villi के बगैर decidua तो है, तो it is very much suggestive. और या chorionic villi है इसमें, तो वो diagnosis बन सकता है of intrauterine pregnancy है कि ectopic pregnancy है. If there is villi, then definitely हम देख सकते हैं chorionic villi in presence in the intrauterine pregnancy, or the identification of this decidua without the villi structure, then it is very much suggestive of the ectopic pregnancy. Next test is the serum progesterone. It can be done there हम progesterone levels देखते हैं. अगर वो levels greater than 25 nanogram per milliliter आ गए, तो हम suggest कर सकते हैं of the viable intrauterine pregnancy. और अगर ये levels less than 5 nanogram per milliliter आ गए, तो ये suggest कर सकता है ectopic pregnancy और abnormal intrauterine pregnancy. The next is the ovarian ectopic pregnancy. Now we have discussed about the investigations, how we diagnose that tubal ectopic pregnancy. Tubal pregnancy we have already discussed. Now second type of ectopic pregnancy is the ovarian ectopic pregnancy, and the word indicates that there is the what is called as the pregnancy has occurred in the ovaries of the pregnant lady, and this incidence, we can say it is 1:40,000. It is very less incident to ectopic pregnancy, and because of the use of IUDs, the women can have the ovarian ectopic pregnancy if she has gone, or if she is using intrauterine contraceptive devices, or if there is any endometriosis, because endometriosis covering the lining of the uterus, but also the ovaries, fallopian tubes, वहाँ पे भी अगर कहीं पे ovaries में भी endometriosis है, तो ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी उधर भी हो सकता है. सेम कोर्स इसका जाता है कि कैसे एम्बेड होता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन द ओवेरियन एज सेम दैट ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी, और ये भी रैप्चर होता है विद इन द 2 or 3 weeks ऑफ द गेस्टेशन. एंड हाउ कैन वी डायग्नोज एज सच, ये हम डायग्नोज क्या उसको बोलते हैं, abruptly नहीं कर सकते. On laparoscopy we can diagnose the ovarian ectopic pregnancy. And there is a particular Spell-Gelberg's criteria for determining this ectopic pregnancy. Actually it has been this criteria कुछ points का criteria है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये ectopic pregnancy है, ovarian ectopic pregnancy है. Basically Spell-Gelberg was a gynecologist, perhaps the German gynecologist, जिसके नाम पे ये रखा गया है. एंड देयर उसने कुछ क्राइटेरिया बताए. जैसे पहला क्राइटेरिया उसने बताया, जो ट्यूब होगा ऑन अफेक्टेड साइड इट मस्ट बी इंटैक्ट. ठीक है ना, ट्यूब चाहे ओवेरियन प्रेगनेंसी हुई होगी, ओवेरीज में इम्प्लांटेशन हुई होगी, बट द ट्यूब जो अफेक्टेड साइड में होगा वो इंटैक्ट रहना चाहिए. दूसरा उसने क्राइटेरिया बताया, जो गेस्टेशनल सैक है इट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द ओवेरी. ठीक है ना, जो गेस्टेशनल सैक है वो इन पोजीशन होना चाहिए विद दैट ऑफ द ओवेरी. ठीक. तीसरा, जो गेस्टेशनल सैक है वो कनेक्टेड होना चाहिए बाय एनी मीन्स टू द यूट्रस, बाय ओवेरियन लिगमेंट या कुछ और,
मगर कनेक्टेड होना चाहिए विद द यूट्रस। एंड चौथा उसने बताया जो ओवेरियन टिश्यूज़ होंगे दे मस्ट बी फाउंड ऑन इट्स वॉल्स। जब हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कुछ करेंगे, दीज ओवेरियन टिश्यूज मस्ट बी फाउंड ऑन द walls, right? So these four criterias were given by the Spelgerberg and for determining the ovarian pregnancy. uh, if now ओवेरियन प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट, अब अगर इसको हो गई है ओवेरियन प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट बिहाइंड इज। मैंने पहले भी बोला ये मिसडाइग्नोसिस होने का बहुत ही ये होता है, एब्रप्ट डायग्नोस हम नहीं कर सकते। इफ़ वी गो फॉर द लैप्रोक्टमी तब हमें पता लग सकता है कि इसको ओवेरियन प्रेगनेंसी है। सो इट इज़ वेरी कॉमन एंड समटाइम्स हम क्या बोलते हैं इसको, ये रप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियल हो सकता है। इन 70% ऑफ द केसेस हम ऐसे भी डायग्नोस कर सकते हैं। एंड इफ़ वी गो फॉर द लैप्रोक्टमी, लैप्रोक्टमी तो हम कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे कि ओवेरियन सिस्टेक्टमी कर सकते हैं, या वेज रिसेक्शन अगर अनरप्चर्ड क्या होगा, या ओफ्रेक्टमी कर सकते हैं फॉर रप्चर्ड। अगर रप्चर हुआ होगा ओफ्रेक्टमी ही कर सकते हैं, टोटल रिमूवल ऑफ द ओवेरीज, या क्या इसको बोलते हैं वेज रिसेक्शन से अनरप्चर्ड को बाहर निकाल सकते हैं हम अगर ओवेरियन प्रेगनेंसी होगा। ट्रीटमेंट में हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं, MTX एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शंस, ये हम मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको देते हैं द वीमेन हैविंग द ओवेरियन प्रेगनेंसी। That was all about today's video. I'll continue with the part 4th of the this video soon, inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.